मुझे पता है कि बहुत लोगों को लगता है कि YouTubers talk about certain products only because it's sponsored. I really like easy, breezy and just summery scents. Hey guys, welcome back to my channel. So I know it's been ages, I think almost a year since I did my last favorites video, and I stopped doing those because I thought that people are not interested in favorites videos anymore. But then of late I'm getting so many requests ki favorite videos dobara karo, we want to see, and it just helps you guys, some of you jo products वगैरह खरीदना चाहते हैं, and I completely understand where you're coming from. So that is what I thought that I'm gonna do today, is just bring back the favorites video. And I know कि it's almost May, so technically I should be doing April favorites, but because I've not done this in so long, I wanted to do my current favorites, like all the products, like literally everything that I'm using right now and I'm loving. ये intro बहुत ज़्यादा long हो गया है, so I hope you guys enjoy watching this video. I am so excited to talk about everything, and yeah, we'll just get started. Before I start, I just want to say, if you guys can hear my AC, I'm really sorry. It is super hot, and मैंने कोशिश की कि पहले मैं रूम ठंडा कर दूँ and उसके बाद फिल्म करूँ, but I just can't sit right now without the AC. I'm sweating and just feeling super hot. So yeah, I hope you understand अगर थोड़ी आवाज़ आ रही है. Okay, let's start with a very basic product that I have been reaching out for constantly, like every single day, and that is a hand cream. So this is the hand cream that I've been using so much of late. This is the Nivea hand cream. It has glycerin and olive. This is what it looks like. So ये मैंने actually last year एक haul में दिखाया था, and after that I used it on and off, and I think I used a full tube, and उसके बाद मैंने इसको reorder किया था because I liked it so much. So this not only smells great, like it is super moisturizing, and also it is super cheap, like I think in 90 rupees या 100 rupees का. And yeah, ever since the pandemic started, we have been just washing hands and sanitizing hands, and मेरे हाथ तो बहुत ज़्यादा rough हो जाते हैं, and I hate the feeling of dry anything, like dry lips, dry face, dry hands. So I need a moisturizer for everything, and that is why I've been using this so much. I absolutely love this. I've tried other hand creams also, but I always come back to this or just Vaseline. Okay, I obviously have a lot of skincare, but the next thing is a fragrance, and that is the Bath & Body Works Salt Water Breeze fragrance, and it is a body mist. पता नहीं मैं fragrance क्यों बोल रही हूँ बार बार. I meant to say कि body mist है. This is the body mist. This is what it looks like. I don't know if you guys can tell, but I've used this so much. I love this because it just reminds me of a vacation, of the beach and stuff. Although I have never been to the beach, but सब कुछ देख के मुझे पता चल गया कि एक beach की smell कैसी होगी. This has a very clean, very fresh scent, and it is literally my favorite scent. This and Gingham, I think those are my favorite scents ever. मेरे पास ना इसका body lotion भी है, and I love it so much. I've almost used that up, and this also, like I use every single day, and you get a lot of quantity, you guys. I use this so much, and I barely made a dent, like halfway through भी नहीं हुआ है, and इसको मैं almost daily use करती हूँ. इसको ना लगा के I just feel super fresh, like I've just come out of a shower and everything, so I really love this a lot. Okay, the next two things are literally my go-to products. I have shown them so many times because I just love these so much, and these products are definitely part of my makeup prep, and also when my skin is super irritated and I can't use a lot of stuff, so I can always go back to these products. The first one is this Derma V face cleanser. So this is what it looks like, and I have used I think 3 or 4 of these because जब भी मुझे बहुत एक्टिव पिंपल हो रहा होता है या फिर मेरी स्किन एक्स्ट्रा इरिटेटेड होती है, मैं हमेशा इसको यूज़ करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी जेंटल फॉर्मूला. इट हैज़ oatmeal, it has no SLS, no parabens and no soap also, so it's just the perfect gentle cleanser. And also before I do my makeup, I like to just use it like gently अपने face को wash कर लो, and then I like to use my Nutriderm moisturizer. This is what it looks like. I absolutely love this product. Again, I have used tubes and tubes of this. This has vitamin E, and this is like the perfect lotion before you apply your base. So I like to apply several things before I do my makeup, foundation वगैरह के पहले, but I always start with this. This will be the first layer of moisturizer I apply on my skin because it moisturizes your skin. It is non-sticky, and both these products are amazing for all skin types. So yeah, मेरी skin चाहे कैसी भी हो, मैं इसको हमेशा यूज करती हूँ before I do my makeup. In case you want to check out these products, मैं इनके link definitely description box में डाल दूंगी. Now because we are on the topic of skincare, the next product is this
L'Oreal hyaluronic acid serum. This is the 1.5 hyaluronic acid serum. This product has changed my skincare game so much. You guys know ना, मुझे इतनी ज़्यादा फेस पे इरिटेशन हो गई थी. My face just became so dull, so dry and just super weird. I can't really explain it. पूरे फेस पे टेक्सचर हो गया था. तो hyaluronic acid ना बेसिकली आपके फेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड आपका फेस ऑनेस्टली इतना प्लम्प फील होता है, इतना ज़्यादा हाइड्रेटेड फील होता है. सो या दिस हैज़ बीन माई गो टू. अगेन आई बीन यूजिंग दिस एंड एंजॉइंग दिस अ लॉट. यू गाइस कैन ऑलरेडी टेल मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रखा है. एंड या अगेन इफ यू गाइस वांट एन इन डेप्थ रिव्यू दैट विल कम वेरी सून एज वेल. एंड बाय द वे दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय L'Oreal. मैं ऑनेस्टली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ. द नेक्स्ट प्रोडक्ट अगेन आई हैव इज अ स्किन केयर प्रोडक्ट बट दिस इज अ फेशियल मिस्ट एंड दिस इज बाय Pilgrim. दिस इज द रेड वाइन फेस मिस्ट एंड टोनर. इतनी गर्मी हो गई है, फेस इरिटेट हो गया है एंड आफ्टर लाइक ऑल द ब्रेकआउट्स एंड स्टफ आई जस्ट नीडेड समथिंग सुपर रिफ्रेशिंग फॉर माई स्किन एंड दिस वन रियली वर्क वेल फॉर मी. इसमें फ्रेग्रेंस है एंड मुझे पता है बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे फ्रेग्रेंट फ्री प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए बट आई पर्सनली डोंट माइंड फ्रेग्रेंस. इवन व्हेन माई स्किन इज डूइंग सुपर वेल आई यूज प्रोडक्ट्स विद फ्रेग्रेंस लाइक थोड़ा बहुत, उससे मेरी स्किन को कोई अफेक्ट नहीं होता है. आई फील लाइक सबकी स्किन डिफरेंट है. आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट रिएक्ट्स टू माई फेस द मोस्ट बट या इट इज नॉट फ्रेग्रेंस. आई हैव ऑल्सो checked with my doctor, so yeah, it's not fragrance. So even though it has a little bit of fragrance, I don't mind it. So yeah, I'm just like really enjoying mist for my face, for my body, for everything. And you know what, मैं भी notice कर रही हूँ कि मेरा face and my chest just looks very off. डिफरेंट कलर का लग रहा है बट सामने से इट इज़ नॉट ऑफ. यू गाइस लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड. आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई रिंग लाइट. आई डोंट नो इफ दिस इज एनी बेटर. आई ट्राई टू फिक्स माई रिंग लाइट सो आई होप कि इससे थोड़ा कोई फर्क पड़ा हो. ऑलराइट, द लास्ट स्किन केयर प्रोडक्ट द लास्ट स्किन केयर प्रोडक्ट आई हैव फॉर यू इज दिस Mamaearth एप्पल साइडर विनेगर फोमिंग फेस वॉश. आई थिंक मैंने इसका रिव्यू कर रखा है ना. आई पर्सनली लव टू यूज दिस एट नाइट टाइम आफ्टर आई रिमूव माई मेकअप एंड आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली लेजी एंड आई वॉन्ट समथिंग जिससे मेरा बस फेस वॉश हो जाए एंड you know pores भी clean out हो जाए. I love their foaming face washes and they come with a silicone brush. Here you go. and मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि इससे आपकी स्किन और ख़राब तो नहीं हो जाती एंड ऑल ऑफ दैट. द थिंग इज आई यूज़ अ वेरी जेंटल हैंड विद दिस. लाइक मैं अग्रेसिवली नहीं घिसती अपने फेस को बिकॉज ऑब्वियसली दैट विल डैमेज योर फेस. और लेजी पर्सन लाइक मी जो रात को बहुत ज़्यादा काम करता है एंड उसके बाद हिम्मत नहीं होती मेरी हमेशा स्किन केयर करने की, दिस इज़ अ ब्लेसिंग. आई कैन जस्ट यूज़ दिस फटाफट एंड एटलीस्ट मेरा मेकअप रिमूव हो जाएगा यू नो. एंड आई हैव अ कोड फॉर दिस एंड Pilgrim एंड अ फ्यू ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स. तो वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इन केस यू वांट टू चेक दीज आउट. अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड और एनीथिंग. मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मुझे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है. मुझे पता है कि बहुत लोगों को लगता है कि you know YouTubers talk about certain products only because it's sponsored but I have said this so many times. I use most of the products like 90% products अपनी डे टू डे लाइफ में. मैंने आप लोगों को बताया था ना एक बार कि मुझे घी का डब्बा आया था, मैंने वो पूरा घी का डब्बा भी खाया था लाइक हमारे खाने वगैरह में. So I am that kind of person. Okay, before I come to makeup I want to talk to you guys about a shower gel and the shower gel is by Love Beauty and Planet. This is their coconut water mimosa flower aroma बॉडी वॉश. ओ गॉड काफ़ी लंबा नाम था बट दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. इट इज़ अ जाइगेंटिक बॉटल. ये मैंने लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे खरीदा था, तब से यूज़ कर रही हूँ. अभी तक इसमें शावर जेल है एंड कैन यू बिलीव मैं और मॉम दोनों इसको यूज़ करते हैं. तो इसमें कितनी क्वांटिटी थी या 400 मिलीलीटर. सो दिस लास्टेड अस अ लॉन्ग टाइम एंड अभी स्पेशली गर्मी के टाइम पे ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिकॉज इसका जो बहुत फ्रेश सेंट है ना. आई जस्ट लव फ्रेश सेंट्स फॉर समर. बस यही पे बात खत्म हो जाती है. यू नो आई रियली लाइक ईजी ब्रीजी एंड जस्ट समरी सेंट्स बट मुझे बहुत फ्लोरल सेंट्स नहीं पसंद. So this has a nice mixture of floral and coconut, so it's very sweet also. I like it. Like for body wash this is really good and मुझे इसके साथ यूज़ करना पसंद है इस चीज़ को. So I think it's a body scrubber. It's not a loofah. Loofah is different and मैंने loofah त्याग दिया because मैंने सुना था कि loofah में बैक्टीरिया स्टोर हो जाता है. When you cut it you can see the bacteria. Oh my god, when I saw that video मैं तो बिल्कुल ऐसे क्रिंज करने लगी. सो आई थ्रू ऑल माई रूफास एंड देन आई परचेज दिस. सो एंड इट गेट्स क्लीन्ड प्रॉपरली व्हेन यू क्लीन इट विद सोप एंड स्टफ. सो दैट इज व्हाई आई हैव बीन यूजिंग दिस एंड इससे बॉडी इतने ईजिली स्क्रब हो जाती है. इट्स नॉट सुपर हार्श, इट्स लाइक अ लिटल हार्श बट एंड आई जस्ट लव यूजिंग दिस विद माई bath wash. Wow, I just love using these with my body wash all over my body and it just really helps to remove the dead skin and exfoliate your skin. But I got it off of Nykaa, so मैं इसका लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. Alright, coming to makeup, I do have a lot of makeup products. Okay, so the first two makeup products are concealers, and yeah, the first one is this Nykaa palette. I have talked about this so many times. You guys must be bored of me talking about this, but my skin is doing not the best and बहुत marks है, so I need something to hide those marks. And when I'm going for like a full coverage, I like to mix up all of these dark shades, and यहाँ पे ये जो salmon shade भी है, and I just use it to cover my acne marks and everything. इससे इतनी beautifully cover हो जाता है. This is literally the best thing Nykaa has made. This made my life super easy. I got it in the shade light 01. I think इसमें 3 और shades है. I personally love this palette. It is super versatile. You can also use these two to contour your face. मैं contour नहीं करती, cream contour नहीं करती. I mean, it blends into your skin like a dream. And इसके ऊपर अगर आप foundation वगैरह लगा, सब कुछ इतना अच्छे से blend होता है ना. So मुझे इसका coverage, इसका सब कुछ formula बहुत ज़्यादा पसंद है. So in case you're looking for a nice concealer palette, definitely go for this. The second concealer I have for you is this Too Faced Born This Way concealer, and I have talked about this so many times again, but I came back to this when I was cleaning my drawers and मुझे पता चला कि मैंने इसको इतने टाइम से यूज़ नहीं किया है and ये expire होने वाला है. So yeah, I फटाफट started to reuse this and I absolutely love this, you guys. Like मैं भूल गई थी कि ये कितना amazing concealer है, and today I only use this on my face. I did not use this concealer. I straight up went with this all over my face, and you guys can see it covered pretty well. Like थोड़ा मुझे मार्क्स दिख रहे हैं इधर उधर, बट 80-90% कवरेज मिल गई है मुझे सिर्फ एक कंसीलर से. एंड येस, इट इज़ अ कंसीलर, बट आई यूज इट ऑल ओवर माई फेस एज अ फाउंडेशन टू, बिकॉज आई रियली लाइक द कवरेज. आई लाइक द फॉर्मूला, इट रियली सूट्स माई स्किन. इट इज सुपर लॉन्ग लास्टिंग ऑल्सो, बट इसका फॉर्मूला थोड़ा मैटिफाइंग है, सो जस्ट बी वेयर इफ यू हैव सुपर ड्राई स्किन, दिस माइट नॉट सूट यू. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट्स आर बाय कफ्स एंड लैशेज, एंड द फर्स्ट two things are their eyeliners. Oh my god, I have been loving the eyeliner so much. मैंने ये eyeliner लगाया था किसी एक वीडियो में ऑफ 1-2 हफ्ते पहले लगाया था. This is their liquid eyeliner, shiny in gold digger. I absolutely love this. You know, yellow gold नहीं होता. I hope you guys can see. And the next one is Colourpop liner in the shade BTS Love. Oh, I forgot कि she named a shade called BTS Love. So this is their purple eyeliner. This is the purple one, and this is what I'm wearing today. And oh my god, you guys, this was so easy to apply. Like एक go में ही बस लग गया. And I remember when I tested out the eyeliners, I told her that this is going to be a super hit because the formula is amazing. I lined it twice so that I can get maximum pigment, and yeah, I was super happy with the way the eyeliner turned out. And the second thing is Cuffs and Lashes के makeup brushes. You guys know I love makeup brushes, and when Nidhi told me that she's coming out with makeup brushes, I was the happiest person. So I really love their makeup brush sets. Okay, I have 2 from the Shy Styles collection, and the first one is CS07. So this is a dome shaped brush, and I just really like to use it अपने lower lash line में to apply some color, you know, smudge करने के लिए. But I use it for shadow. I don't use it for kajal because kajal के लिए मुझे और precise brush चाहिए होता है. And the second one is again from the Shy Styles collection, and this is their angled contour brush. Let me tell you, ever since I got this, I have stopped using any other contour brushes. This is the only contour brush I use. I love it so much. It is their CS10. This is literally just perfect to contour. I really like it. And then I really love their Cuffs and Lashes F011 brush. This is what it looks like, and I basically use this for my spot concealing like everywhere. So I use this with my Nykaa palette and everything, you know, यहाँ पे जहाँ पे भी है, because it's the perfect spot concealer. You can also use it to apply concealer अपने क्या बोलते हैं इसको? Oh God, what do you call this? अंडर आइज पे. आई वाज लाइक लोअर लैश लाइन पे नहीं, अंडर आइज पे, यू नो. सो दिस इज लाइक द परफेक्ट कंसीलर एप्लीकेशन ब्रश. यू कैन ऑल्सो यूज इट टू ब्लेंड इट, बट आई लाइक टू जस्ट place it and then blend with my sponge. So really loving the Cuffs and Lashes brushes. If you guys want to check out these products too, मैं इनके भी links डाल दूंगी. Okay, the next 2 products are face products, and the first one is this Too Faced Natural Face Palette. First of all, the packaging, oh my god, ये Too Faced का best packaging है, and I absolutely love this. So इसके अंदर इतने सारे shades आते हैं, and trust me you guys when I tell you, I use all of these shades. Like there is not a single shade जो मैं use नहीं कर रही. I really like this blush and this blush, and मैं इन दोनों से
कंटूर भी करती हूँ. इट्स लाइक द परफेक्ट फॉर्मूला जो काफ़ी पिगमेंटेड है बट इट ब्लेंड्स वेरी इजीली एंड बहुत ही बटरी फॉर्मूला है. दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव पैलेट बट दिस इज ऑल्सो वर्थ द मनी एंड इफ यू गाइज लाइक हाई एंड प्रोडक्ट्स you can definitely invest in this. I hope you guys can see this is the highlighter and ये वो जो pink blush है. And then I have a mascara and that is by ELF. This is what their mascara looks like. This is their Keep Your Curl mascara and I really like इसका ये जो wand है ना, it's very nice and it's a good everyday type of mascara. Now this won't give you extreme volume but yeah it will lengthen your eyelashes a lot and इसको मुझे lower lashes पे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है. You guys know I am not the biggest fan of false lashes and I don't ever use false lashes. I always just use mascara and I'm good to go. And अगर आप इस mascara को अच्छे से layer करो it will give you that wispy look as well. And then another product is their brow, क्या बोलते हैं इसको, brow gel. It's called the Wow Brow Gel and again I really like this. This is my go-to. I'm not using anything else but this because I hate doing my brows. Like doing my eyebrows is one of the biggest hassles. So I've always wanted something बहुत quick हो and बहुत easily मेरे brows हो जाए and yeah this is it you guys. So I just run it on my eyebrows and that is it. I am good to go. 2 minutes में हो जाता है. इससे ज़्यादा खुशी मुझे किसी चीज़ से नहीं मिलती जब मैं इसको यूज़ करती हूँ और मेरे eyebrows are done. Okay, so I have so many lip products starting with the Body Shop Vitamin E lip balm. You guys know I love lip balms. Lip balms are my weakness. So yeah, I've been using this so much. This is what it looks like and this is very nourishing. I was not expecting it to be of such good quality but this is something जो मैं अपने तकिए के साथ रखती हूँ. रात को अगर मेरे लिप्स पर चैप फील कर रहा है just use it. So this comes really handy and I love it. It's very moisturizing and it retails for 395 rupees. And then I have tons of lipsticks for you guys. So the first one is by K Beauty again. Their lip crayon in the shade Gossip. This is what it looks like. So her lip crayons are pretty great but थोड़ा inconsistent formula है. इसका touchwood formula बहुत अच्छा है. This is very creamy, very pigmented, lasts very long and mattifying. So I really like this and of course you know my favorite type of shade. The second one is Babe Alert by Smashbox and आज मैंने Babe Alert and Gossip को ही layer किया है and I really like दोनों का जो combination है. Again Smashbox has one of the best liquid lipstick formulas. Like literally it is superior and I really think it's worth the hype and the money. So in case you want to invest in their full size liquid lipsticks you can do that. Otherwise उनके mini sizes अगर available है तो आप वो भी try out कर सकते हो because मुझे इनका formula काफ़ी अच्छा लगता है and they have a wide variety of shades too. Next I have this L'Oreal liquid lipstick and it's in the shade I Choose. I really like ये जो L'Oreal Paris का पूरा liquid lipstick का range है ना. This is what the shade looks like. So you guys can see ना I am back into pinky nudes. This is one of the most lightweight formulas ever. ऐसा लगता है कि आपने अपने लिप्स पे बस इंक लगाई है वो absorb हो गया, आपको फील भी नहीं होगा but it is super pigmented. आपको इतना ही पिगमेंट मिलेगा. So I think that L'Oreal Paris killed it with the formula. Alright, the last lip product I have for you is this Lunar Beauty lip gloss. So this is in the shade Aura and I absolutely love this gloss so much. This is what it looks like. The packaging is so luxe you guys and ये मुझे अदिति ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया था because she knows that I really love glosses. Thanks to her actually उसी ने मुझे ऐसे gloss lover बनाया है and this is such a beautiful gloss shade. You guys can see I applied it all over my lips today and I really love how it looks on my lips. It is non-sticky. It just looks very nice, very lightweight and बिल्कुल चिप फील नहीं होता है. You can get this from Beauty Bar Lounge on Instagram. They have all international products. So if you want to try this or any of the other international products you can inquire, उनसे पूछ लेना एक बार and they'll give you the details. And yeah, that completes all the beauty and skincare products. And now let's talk about something else and that is a candle. So my favorite candle right now is this and this is by the Whiff Sense. They are an Instagram based store and ये soy candles बनाते हैं and soy candles are very environmental friendly and इससे ना आपको congestion भी नहीं होगा. This smells like peach but again so refreshing and fresh and I love this so much. I've been burning this a lot. Can you see मैंने कितना इसको burn कर रखा है and I absolutely love their candles. They have sent me so many candles. Definitely go check them out because they have so many different scents and yeah, those are all my current favorite products. I know this was a long list and I'm pretty sure I'm missing out on some products. अब जो मैंने इस वीडियो में मिस कर दिया वो नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगी. Okay, other than that I also wanted to do some personal
फेवरेट्स तो नहीं, थोड़ा अपडेट एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज मैं वो पहले करती थी ना, अपने फेवरेट्स वीडियो में ही बताती थी. सो आई अंडरस्टैंड इफ यू डोंट वांट टू वॉच एनी पर्सनल चैटर, बट अगर आपको सिर्फ फेवरेट्स ही देखने थे देन दिस इज वेयर यू कैन एग्जिट. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय. ओके, आई हैव सेवरल अपडेट्स बट आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. The first update is that yes, I am kind of changing the content. So there is this demand of vlogs also, there is this demand of beauty videos also, but the thing is कि vlogs की demand हमेशा सबसे ज़्यादा होती है. But I understand that as much you want to see personal content, you also want to see other type of content as well, जो थोड़ा entertaining हो and आपको product recommendations भी मिले, आपको hauls भी देखने को मिले. So that is why I am switching things up. Now I'm like I'm gonna cater to every section of my audience. So जिनको ऐसी टाइप की sit down videos recommendation वाली देखनी है वो ये enjoy करें, जिनको व्लॉग्स देखने वो एंजॉय करें, थोड़े बहुत चैलेंजेस वाले तो वो एंजॉय करें, हॉल्स, यू नो व्हाट आई मीन राइट. एंड दिस कार इज बीइंग सो अनोइंग. ये क्या बात हुई यार. So yeah, I'm just gonna try to mix it up as much as possible. And I also started the sit down talking video series. So I've been doing confessions videos and also like reacting to your opinions and just like chit chat video जैसे मैंने YouTube वाला भी किया. And you guys are really enjoying that type of content. So I'm gonna do more of those. I'm gonna do Q&As also and also like topic discussions and all of that. Because मुझे से बैठ के बकर करना सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है. So I have so many opinions. So मुझे लगता है कि मैं सारे अपने opinions बताती रहूँ. तो मुझे बहुत gratifying लगा कि उन वीडियोस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया. सो आई एम गोना डेफिनेटली कंटिन्यू टू मेक दोस. अदर देन दैट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट दिस मंथ इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ज़ारा वीडियो and also a Korean cooking video. Yes, your girl is gonna cook. मैंने इतने सारे spices मंगवाए हैं and let's see मैं बना पाती हूँ कि नहीं. I will need mom's help, but yeah, I will start to cook a little. And other than that, I have so many ideas for like sit down videos that I'm just gonna do. Like I'm not gonna overthink it. अगर मेरे दिमाग में अभी कोई idea आ रहा है ना, I'm just gonna execute it. I have a giveaway at the end of this video and this is a continuation from my March giveaway. I told you guys 5 giveaways रहते हैं, so अभी वो continue होगा, but मैं अभी giveaway winners नहीं announce कर रही just because अभी सिचुएशन ऐसी है. सो जब ये 5 गिवअवेज भी खत्म हो जाएंगे एंड जब सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी आई विल अनाउंस द विनर्स सो आई कैन शिप द प्रोडक्ट्स, बिकॉज अभी तो शिपिंग वगैरह कुछ भी पॉसिबल नहीं है. सो या दैट इज अबाउट इट. आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस current favorites and life update video. Thank you so much for all the love, for all the comments and everything. You guys truly make my day. I will try to edit this today only and upload this for you guys. And yeah, thank you so much for watching. Subscribe if you haven't already and I will see you guys in my next video. Bye bye. For today's giveaway, I'm once again including products that I really like, some skincare, and all you have to do to win this is be a subscriber of my channel, leave a comment down below, and also follow me on Instagram. My Instagram ID is Anindita Chakravarti. And yeah, that is about it. I will announce the giveaway winners very soon.